Very good evening, all the participants. Today we will be discussing the fresh start process. So, fresh start process, as the name itself implies, that it allows the debtor to start on a clean slate without paying anything. But this option is available only to people with limited assets, limited income, and limited liabilities. And it can be availed only once. So that entry will be made in his records that okay, he has availed the fresh start process. Another important thing we have to note is that there are no rules or regulations as on date on fresh start. So if you want to file an application, there is no form, there is no procedure. But they can ask you a case study on fresh start process, and they have been very frequently asking case studies on fresh start process. So you have to understand it thoroughly and you have to prepare it accordingly. This is a slide in which we have tried to explain the entire fresh start process in a single slide, because on the day before the exam, slides like this will help you in revising. Suppose you want to revise fresh start process, so you go through only this slide. It is editable. You can make your own notes on this if you want, so that it helps you before the exam date. So I would now request Sudhakar ji to please read the provisions on fresh start process and take us through the process. I will intervene wherever required. Sudhakar ji, please. Yes, sir. Yes, sir. So Section 80 speaks of the debtor having a gross annual income of 60,000 or less, and the aggregate asset must be less than or equal to 20,000, and their aggregate qualifying debts should be less than or equal to 35,000, and there must be no dwelling unit. मतलब encumbrance, unencumbered रहना. No previous FSO. Sir, FSO is what, sir? Fresh start order. Fresh start order in the last 12 months. 12 months in which the debtor can file. And only the debtor can file this application. So if Yes. they ask you the question whether creditor can file, normally in all the processes like in CIRP, in fast track, in insolvency, in bankruptcy, you will Yes. find that debtor or creditor can file the petition. But here only the debtor can file, creditor cannot file. And also only once, sir? Yes. Yeah. Yes, please. Now 81. Section 81 is application by the debtor, wherein the interim moratorium starts from the filing date, where all financial details of immediate family for the last 2 years, that is the look back period, the list of debts and interest rate payable must be provided. So all these details have to be given in section 81. So there is a concept of interim moratorium in fresh start. Yes, in CIRP or in fast track, there is no such similar process. But here, as soon as the application is filed, even before it is admitted, interim moratorium starts. Yes. And there are some conditions in once the interim moratorium is in vogue. So what are those conditions? They are given in the section itself. So what section 81 says? It says any action, legal action or legal proceeding pending in respect of any of his debts shall be deemed to have been stayed. But what is important to note here is that only proceedings relating to the debts stand stayed. But other proceedings, suppose he has committed a murder, so that proceeding will not be stayed. No creditor shall initiate any legal action or proceeding in respect of such debt. So proceedings only in relation to debts are stayed, not all the proceedings. This is an important thing to note. Yes, please. 82. Yes, section 82. If the application is filed through the resolution professional, the adjudicate authority will direct the board to confirm within 7 days or reject the appointment of the appointment, and board shall revert back within 10 days. Right. So here there is no concept of IRP. In fresh start process,
There is no concept of IRP. So the word used is RP only. So they say if the debtor can file the application on his own also, and he can file through RP also. And the adjudicating authority will direct the board to confirm within 7 days whether he is suffering from any of the disciplinary proceedings, or they may reject the appointment and board to revert in 10 days as in normal circumstances. Section 83. Yes, sir. The RP will examine and recommend acceptance or rejection within 10 days. He will examine the qualifying debts, conditions in 80, Section 80. in section 80, truthfulness and ability to pay as well. So actually section 83 says, because these are cases where the amount of default is very less. What is the amount of default in case of fresh start process, and whether default at all is necessary? What is the condition? Whether default is necessary, or you can just file an application for fresh start. Necessary, sir. What is the amount? I mean, the amount is 35,000, sir. No, amount of default. Amount of 1,000, sir. 1,000. It is given in 1,000. section 1,000. 78. So section 78 says where the amount of default is not less than 1,000 rupees. 1,000. And central government may by notification may increase it to not more than 1 lakh rupees. So amount of default is 1,000 rupees. Since the amount of default is very, very less, so RP is required to examine the application before adjudicating authority applies its mind to it. So section 83 says that RP will examine and recommend acceptance or rejection of the application within 10 days. 10 days are allowed to the RP to examine the application, and he will examine the qualifying debts, whether the conditions which are given in section 80 regarding income, assets and liabilities are satisfied, and whether the application is truthful and there is no ability to pay. So these are the conditions he will satisfy before recommending the application for acceptance or rejection. This is section 83. Yes, now 84. Yes, sir. The adjudicating authority will decide based on the RP report within 14 days and provide copy of order to creditors within 7 days. Right. So they say the adjudicating authority, they will decide on the basis of the report of the RP. And the time allowed to the adjudicating authority is 14 days, which is of course directory in nature. And they shall provide copy of the order to creditors also within 7 days. Sure. Now, the important point here to remember is whether copy of the order shall be given to creditors in case of rejection also, or in case of acceptance of the application. Section 84. What is your answer on this? So, what is the question, sir? Question is, RP has given a report and adjudicating authority has decided. Now the question is, in case the application is rejected by the adjudicating authority, whether still copy of the order shall be given to creditors or not, or only in case of acceptance copy of the order will be given to creditors. What is your answer on this? 84. You can read from the book also. It has to be given, sir. Otherwise, how will the रिजेक्शन में भी देंगे सर. Rejection में भी देंगे. Okay. Right. So it says 84.3. The answer you will find in section 84.3. 84.3 says a copy of the order passed by the adjudicating authority under subsection 1 along with a copy of the application shall be provided to the creditors mentioned in the application within 7 days of the passing of the order. And 84.1 says that they may pass an order either admitting or rejecting the application. So section 84 subsection 1 read with section 84 subsection 3 says that the copy of the order shall be given to creditors in all cases, whether in case of acceptance or rejection. So if you want, you can write it here because they will ask you questions like this. And a copy of the order to creditors within 7 days. Copy to be given in both cases. Acceptance or rejection. So Rejection. you can make your own notes like this. सर रिजेक्शन में इसलिए देंगे क्योंकि so that to enable them to take further action.
अगर फ्रेश स्टार्ट में एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो क्रेडिटर्स कैन टेक फर्दर एक्शन। हाँ वो तो है ही। नहीं वो तो उसके ठीक है, वो तो बात है ही। चलिए प्लीज नाउ 85। बिल्कुल ठीक है, Yes, 85। yes, sir. So 85, the 180 days moratorium with effect from the admission day, and there will be no action against the debtor, and debtor cannot enter into any fresh agreements and must inform partners no overseas travel allowed during that period. So it says section 85 says that there are certain conditions once the application is admitted, and the whole process has to be completed within a period of 180 days. So during this period, no action can be taken against the debtor, and debtor also cannot enter into any fresh agreements. And in case he is a partner in a partnership firm, then he must inform his partners that he is undergoing the fresh start process. And he cannot travel abroad. Whether he cannot travel abroad or he can travel abroad with the permission of the adjudicating authority. Whether there is absolute bar on travel or whether he can travel with the permission of the adjudicating authority. What is your answer? He can travel with the with the permission of the adjudicating permission. authority, sir. Right. So it says no overseas travel except with the permission of the adjudicating authority. We can write like this: except with the permission of the A. Right? इस तरह से आपको लिखते रहना है, अपना नोट्स बनाते रहना है, जो जो भी आपको लगता है कहाँ कहाँ भी दिक्कत है. नाउ 86. Yes, sir. What 86 is? तो थोड़ा बड़ा कीजिए, sir. बड़ा ही है. Yeah. हाँ. Creditors can appeal to the resolution professional within 10 days on qualifying debts or incorrectness of the same. RP to examine and revert in 10 days. Provide list of creditors to the adjudicating authority. Now, suppose the application is admitted, moratorium is in place. Now there is a right with the creditors, so they can appeal. But whether they can appeal directly to NCLT or DRT, the answer is no. They have to appeal to the RP. So they can appeal to RP within 10 days, and there are certain grounds only on which they may appeal. So what are those grounds? Inclusion of debt as a qualifying debt or incorrectness of the details of the qualifying debt. So these are the only two grounds on which appeal may be filed. RP shall examine and revert in 10 days and provide list of creditors to AA. Now, suppose creditor filed an appeal with the RP, but RP rejected that appeal. Now, what is the right available to the creditor? He can appeal to AA. So, aggrieved creditor or debtor can appeal to AA. Now, in section 86, if they ask you this question, whether debtor can appeal, in 86, whether a debtor can also appeal or only creditor can appeal? हाँ जी बोलिए. 86 में डेटर भी अपील कर सकता है क्या, या क्रेडिटर ही अपील कर सकता है? सर दोनों कर सकते हैं। नहीं, ओनली क्रेडिटर कैन अपील. Creditor can. लिखा हुआ है सेक्शन 86 में. क्या लिखता है? एनी क्रेडिटर मेंशन्ड, अदरवाइज डेटर भी लिख देते. So why not debtor, sir? अरे डेटर का क्या करना है, डेटर को तो फ्री फंड में छुटकारा मिल रहा है ना. डेटर का तो कुछ है नहीं, उसको कह रहे हैं मौज करो तुम, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे तुम्हारा. तुम्हारे पास 60,000 की सालाना 5,000 रुपये महीना कमा रहे हो, है. टोटल एसेट्स तुम्हारे पास सब मिलाकर के 20,000 है. टोटल तुम्हारा क्वालिफाइंग डेट जो है 35,000 है. तो इसलिए तुम जाओ मौज करो. अब इससे ज्यादा क्या चाहिए उसको? ये थोड़े कि वो कुछ अपनी जेब से और पैसे दे देंगे उसको. तो इसलिए वो उसका अपील कुछ नहीं है. ओनली क्रेडिटर कैन फाइल एन अपील. Yes. So, but if the RP does not consider his consider the request of the creditor, then the aggrieved creditor can appeal to AA within 10 days.
And what are the grounds? The grounds could be that he was not provided with an opportunity of being heard, there was a collusion, or he was not complying. He was not complying with the directions or the provisions. ठीक है? Yes, sir. AA to revert in 14 Ah, days, with and the the order requirements of copy section shall be 86. forwarded to the board. Yes. So in this case, the adjudicating authority shall revert in 14 days, and in case in this case the order of the copy shall be forwarded to the board also. Okay. Yes, sir. So whether the copy shall be forwarded to the board in all cases, or the copy shall be forwarded only in the cases where the appeal has been allowed or the application has been allowed. Suppose a creditor filed an appeal with RP. RP rejected that appeal. Now, creditor filed an appeal with A. A also rejected that appeal. So, in case A has rejected the appeal, whether he will still file this information with the board or not? Yes or no? This is No, the sir. question. No. So, he will file, If it is allowed. yes, only once it is allowed. ठीक है, ये आपका सेक्शन 87. नेक्स्ट 88. Yes, sir. Debtor to So provide. you can write like this: order copy to be forwarded to the board in case appeal is allowed. In case appeal of the creditor is allowed. Allowed. Appeal to the appeal of the creditor कर दो. Of the creditor is allowed. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 88. 88 क्या बोलता है? Yes, sir. हम्म So 88 speaks of the debtor to provide all information correctly and in a timely manner to the resolution professional. Right. So now in section 88, whether debtor only will provide the application, will provide all the information, or RP can ask some other person also to provide information. Section 88. Only debtor, sir. Only debtor. So section 88 talks of general duties of the debtor. Debtor. ठीक है? Now, suppose RP wants an information from somebody other than the debtor, then whether there is any section for this. Suppose RP wants the information from associate of the debtor or a family person. So which is the section which covers this thing? So please repeat your question. The question is, section 88 talks of certain duties of the debtor. My question is, RP wants some information from associate of the debtor. So whether this right of the RP of asking the information from relative of the debtor is also covered under section 88, or there is some other section which talks of this. Under This is section my 88, it is not allowed. question. Under section 88, it is not allowed. Only the debtor will give as the Okay. duty. Now, can you tell me any other section where it is allowed, or it is not allowed at all? That it's in section 83(3). 83.3. The RP may call for such further information or explanation Right. in Very connection correct. with So the it application. says the RP may call for such further information or explanation in connection with the application as may be required from the debtor or any other person who, in the opinion of the RP, may provide for such information. So it says that RP or some other person also. But this is regarding examination of application. My question is, once application is admitted, then because 83 talks of situation which is pre-admission. Right, sir. Now once application is been admitted and he wants the information from some other person, then what is the section?
Sir, Yes, please. Any section governing this? You can No. see section 86, subsection 7C. 86, subsection C. What it says? It says on the basis of examination under subsection 5 or subsection 6, the resolution professional shall take such other steps as he considers necessary in relation to the debtor. debtor. So it gives you some sort of residuary powers. They will not ask you the question on sections, but you should be able to find out that where it is covered. So I think it will be covered in section 86 7C. Yes, please. कहां पर थे हम लोग? The general duties of debtor हो गया, sir. 89. Yes. Yes, sir. So the creditor or debtor can appeal to the adjudicating authority for change of RP. The AA shall direct the board within 7 days, and the board shall recommend new RP within 10 days. So here in this section 89, whether there is any prescribed percentage or a single creditor or debtor can appeal to AA. What is your answer on this? In section 89, which gives the power to the creditor or debtor for change of RP, whether a single debtor or creditor can ask for this change or there is a specified percentage. Sir, there is no specified percentage. There is no specified percentage. So it says where the debtor or the creditor, and they have used the word in singular. So it means even a single debtor or creditor may apply. Yes. Next, section 90. Yes, sir. Section 90 speaks of RP can apply to the adjudicating authority for directions in case of any non-compliances by the debtor. So section 90 has a phonetic sound which is similar to 19. 19 is in CIRP. Section 19. Here it is section 90. So section 19 talks of non-cooperation by application to adjudicating authority in case of any non-cooperation. So similar is the section here. So RP can apply to A for directions in case of any non-compliance by debtor. Okay. So whether only debtor is covered or it will cover other persons also? Only debtor. Here, debtor only, sir. But if you read section two 90, subsection 2, हाँ जी so it says the resolution professional may apply to the adjudicating authority for directions in relation to any other matter under this chapter for which no specific provisions have been made. So 19.2 will cover every other thing for which the RP wants to make an application to the adjudicating authority. Okay. चलिए section 91. 91. Section 91 deals with the revocation of the order. So RP can seek revocation of order under section 84 if modified and under changed circumstances or because of non-compliance. So there was a case study on this section in the recent examination. So they said that the circumstances of the debtor have changed. He has won a lottery. And now what will happen to his application? So answer is given in section 91. Section 91 says that for revocation of the order also, RP will make the application because it was at his on the basis of his report that the application was admitted. So section 91 says revocation of order admitting the application. So revocation of order will also be made on the application of the RP. And what are the grounds? There is a change in the financial circumstances of the debtor and non-compliance by the debtor, or he has acted in a malified manner, or he has willfully failed to comply with the provisions. So in this case, what will happen? It says that the adjudicating authority within 14 days may by order admit or reject this application.
ठीक है. And on passing of the order admitting the application, the moratorium and the fresh start process shall cease to have effect, and a copy shall be provided to the board for the purpose of recording an entry in the register referred to in section 196. So these are the consequences, and a case study was framed on this section, besides other sections, but this was the main. So within 14 days, in 91, within 14 days, adjudicating authority will decide. Within 14 days, A shall decide. ठीक है. और फिर क्या करेगा? Copy to the board. In the case of admission, in case this application is admitted, admission of this application, well, admission of this application for revoking. So in this case, copy shall be provided to the board. ठीक है. चलिए, तो 91 भी हो गया. 92 क्या बोलता है? Yes, sir. 92 speaks of the RP shall prepare a discharge order within a minimum of 7 days before the end of the moratorium, and the AA shall pass order discharging debtor from debts. So discharge So it order says, the RP shall prepare a final list of qualifying debts and submit such a list to the adjudicating authority at least 7 days before the moratorium period comes to an end. So what the RP is doing, he is preparing a final list of the qualifying debts. ठीक है. So RP prepares not the discharge order but the list of qualifying debts. Final list. Yes, sir. So RP shall prepare final list of qualifying debts. ठीक है. Minimum 7 days before the end of the moratorium, and A shall pass the order discharging the debtor from qualifying debts. ठीक है. So he shall be discharged only from qualifying debts, not from all the debts. And what is the difference between qualifying debts and other debts? All debts? What is the difference between these two? So what could be the type of debts which are not included in qualifying debts? If it is a secured debt, or it is an excluded debt, or it is contracted 3 months prior to the date of making the application. Right. So these three are the Exactly. type of debts which are not covered under qualifying debts. Okay. And 93 says that the RP is expected to perform his functions in compliance with the code of conduct which are given in section 208. So this completes our Fresh fresh start. start process. ठीक है. तो देखो कितनी जल्दी समझ में आ गया हमारे को फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस. नाउ अभी क्या है कि इसकी थोड़ी सी केस स्टडी कर लेते हैं बिफोर वी मूव टू इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी. फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस. यस. तो ये वाला केस स्टडी पढ़िए जरा एक बारी, और इसमें जो क्वेश्चन हो आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं. देन विल डिस्कस. यस सुधाकर जी प्लीज. Yes, sir. Taste Bud was a restaurant located at leased premises in New Delhi. It had a great reputation, award-winning chefs, and tastefully designed interiors. Much of its business came from executive lunches and dinners. Following the opening of Heavens, another excellent restaurant in the nearby vicinity, trading losses were incurred by Taste Bud, and eventually the business became unsustainable. Efforts to either have the rent reduced or to sell the business were unsuccessful. Suppliers of food, beverages, and utilities were unpaid for supplies provided in the previous 45 to 60 days, amounting to around 90,000 rupees. So first question, what will happen to this liability incurred in the previous 45 to 60 days? इसका क्या ट्रीटमेंट होगा?
फ्रेश स्टार्ट में ये जो 90,000 है इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? सर ये क्वालिफाइंग डेट में नहीं आएगा। नहीं नहीं आएगा आएगा। सर। वेरी 3 months. करेक्ट, बिकॉज इट इज कॉन्ट्रैक्टेड 3 months प्रायर टू द डेट ऑफ द मेकिंग ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है ना? Yes. तो 45-60 days में इसीलिए लिख दिया उसने। चलिए नेक्स्ट। So there were rental arrears for 1 month amounting to 50,000 towards landlord Mr. Deepak. अब इसका क्या होगा? ये जो रेंटल एरियर्स है Yes, sir. 1 month का. ये आएगा कि नहीं आएगा क्वालिफाइंग डेट में? 1 month में तो आएगा सर. क्यों आएगा? नहीं आएगा सर। नहीं आएगा. Okay. भाई 3 महीने तक 3 महीने से पुराने, पुराने। 3 महीने से ज्यादा पुराने होने चाहिए। Right, sir. Yes, 3 महीने sir. के जो हैं, जो अभी अभी डेट लिया, Correct, sir. Yes, वो sir. क्वालिफाइंग डेट में नहीं आएगा। Yes, yes. तो 90,000 इज नॉट कवर्ड, 50,000 इज नॉट कवर्ड। यस। Covered. Taste bud also had a secured creditor, secure bank. हाँ, इसका क्या होगा? नहीं सिक्योर्ड आएगा क्रेडिटर सर। का ये भी सिक्योर्ड नहीं आएगा। ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये सिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड Yes. है। The bank indicated that it did not wish to appoint a receiver, file for insolvency as the accounts were regularly maintained. Taste bud was managed by Mr. Kapil as a sole proprietor. He employed a salary bill of employee. He employed एक लाइन staff छोड़ of दिया 10 आपने। people. आपने एक Yes, लाइन sir. छोड़ दिया। He employed a staff of 10 people, including a chef, हाँ assistant chef, हाँ 6 wait, sir, 6 हाँ waiters, हाँ। and 2. ये थोड़ा कम थोड़ा छोटा कर दूं? हाँ सर. अब ठीक है। हाँ yes sir. And 2 housekeeping staff. Staff. Salary bill of employees is 2,80,000 per month. The salaries due to these employees were paid in half since the past 4 months. The restaurant had utensils and equipments worth rupees 50,000. Mr. Kapil had earned an income of rupees 50,000 during past 1 year. Mr. Kapil also has a court challan due for rupees 10,000. He is having a matrimonial dispute with his wife, and the court has awarded interim maintenance of 2,000 per month to be paid to his wife. Based on the above fact, please answer the following. ठीक है, देखिए, we have seen some of the things. I have to go downstairs. लाइट चला गया है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? नहीं है ना? कोई बात, मैं नीचे जाता हूँ। Just a minute. All well, sir? Yes, yes, all well. Actually, light has gone, so I'll go downstairs. Okay, we wait. Power चले गए सर. हाँ? लाइट चलेगी ऊपर ना? इन्वर्टर में उसमें वो नहीं है ना? लगा दिया? चलो, तुम ये टीवी बंद कर दो। बात 9:30 तक ही है, कोई दिक्कत। Yes, please. Now I think I am audible. Am I audible? Yes, sir. Yes Okay. sir, very much sir. हाँ, ठीक है। So there was some electricity issue, so I had to come downstairs. So now we have seen some of the things. Supplies, since they cover the previous 45-60 days, so not covered. Rental areas not covered. Secured loan not covered. Salary bill
salary bill is 2,80,000 per month, and it is due since past 4 months. So for 3 months, not covered. For 1 month, only 1,40,000. Half. So 1,40,000 is the liability. Okay. So if 1,40,000 is a liability, and so it is a qualifying debt, so this person is not entitled for fresh start because qualifying debt should not exceed 35,000. 35%. है ना? हाँ. And they had utensils and equipments worth 50,000. So assets are 50,000 rupees. 20,000 से ऊपर नहीं 20,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए. And वैसे भी दो income, हाँ जी. 3 में से 2 कंडीशंस क्वालिफाई नहीं करती हाँ, हैं. and he has earned an income of 50,000 during past 1 year. ये पंखा चला देना. होना. Gross income 60,000 से ऊपर. हाँ, Mr. Kapil also has a court challan. So this court challan is also not covered. वो तो excluded debt में आ जाता है Excluded आपका, में है ना? और matrimonial dispute is this will also be covered under excluded. excluded debt. ठीक है, चलिए now next. So whether taste bud can apply for fresh start process? No. 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 ठीक है, so he cannot apply. Utensils and equipments. So they will be included in the aggregate value of the assets. Income 50,000, debts incurred, salary unpaid, not covered, salary unpaid since past 4 months, 5,60,000, qualifying debts are 1,40,000, secured loan not covered, maintenance to wife not covered. So we have to see all these conditions. Next. So no, taste bud is ineligible for applying for fresh start process. Okay. Why? Qualifying debts exceed 35,000 and aggregate value of assets exceeds 20,000. Now, suppose presume that it is admitted. Suppose the liabilities were less. Then answer the following questions based on this presumption, that is application has been admitted. So what are the liabilities from which he will not be discharged despite a discharge order issued by the adjudicating authority? Suppose his application is admitted, and so what are the liabilities from which he shall still not be discharged? Whether he will be discharged from this All the above maintenance? होगा. No, all of the above, sir. No. Employees dues for the past 3 months? No. Secured loan? No. All of the above. So all of the above will be the answer. Okay. And for this we have to see the definition of qualifying debts and excluded debts. Now, presuming application of taste bud for fresh start process is admitted, there are certain changes in the financial statements of taste bud which makes them ineligible for fresh start process. Now, what are the options available? Suppose his income increases or he is not eligible, then what are the options available? Option A. Resolution personnel should file a petition for revoking admission of the A. fresh start process. The The answer is A. Okay. Now, for the purpose of calculating annual income, the period covered shall be, what shall be the period covered? 12 months preceding the admission of the application, 12 months preceding the filing of the application, last financial year, any of the above. B. Filing of application. Preceding the Right. filing of So, this seems logical. How the assets shall be valued? Cost price, market price, fair market value? C. The answer is C. A few months ago, an application for fresh start was made, but it was withdrawn by Mr. Kapil before its admission. He made an application earlier also, but he withdrew it before it was admitted. Now, can he avail this opportunity? Yes. Yes, because previously no fresh order was made. Okay. Can any legal proceedings be initiated against Mr. Kapil once an application is admitted? By secure bank, by employees, by his wife, by landlord? No. Not by any 4. Yes. So basically, during moratorium or interim moratorium, what is covered? The coverage is in respect of any debts. Okay? Because secure bank has a debt, so he cannot initiate. Employees also have claims, they cannot initiate. Wife also has to claim some money, cannot. And landlord also cannot initiate any legal proceedings. Next. Son of Mr. Kapil is settled abroad. His marriage is due in the coming month. He has sent a ticket for his father because he is very close to his father.
The application is still pending with the adjudicating authority. Now, first, you tell me whether Mr. Kapil will come under the definition of immediate family or not. This is the first question. Whether Mr. Kapil, the son of the debtor, comes within the definition of immediate family? Yes or no? Yes. Obviously, sir. No. Oh, He is settled abroad, so he is not dependent. okay. If you see the definition, so what the definition says? So dependent होना Yeah. चाहिए. So is he dependent? The answer is no. No. A small clarification. Yes, please. He is in the immediate family, but he will not contribute in the discharge because he's independent. No. Section 79, subsection 17 clearly says immediate family of the debtor means his spouse, dependent children, and dependent parents. So since Okay. he is not dependent, he is not covered under immediate family. Okay. But regarding spouse, this condition of dependent or interdependent does not operate. So spouse is always an immediate family, whether or not she is dependent. But regarding children, if they are dependent, only with them they will be covered under immediate family, otherwise not. ठीक है? Clearly लिखा हुआ section 79, 17. Now, second question. So son has sent a ticket for father and the application is still pending with the adjudicating authority. So can he go? Yes. Yes, to obtain the permission. Because only with permission he can go, otherwise he cannot go. So बट what सर is- इसमें एक मेरा डाउट है कि जब हाँ। एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है तब भी परमिशन चाहिए. वो तो चाहिए ही ना, परमिशन तो नहीं मिली ना उसको. एप्लीकेशन अभी अप्रूव कहाँ हुई है ये हाँ तो एप्लीकेशन नहीं जा सकता ना वो, he cannot go. ओके. भाई दैट कौन मींस सा सेक्शन आपका? सेक्शन 85 है ना. सेक्शन 85 सबसेक्शन 3 subsection F 85 3F not travel outside India except with the permission of the adjudicating authority. So he cannot travel abroad. लिखा हुआ 85 3F. even though the application has not been accepted. है? Even though the application has not been accepted. सर यहाँ वर्ड ये लिखा कह हुआ रहा है है can his father attend his marriage? So the answer is here is yes, because only on admission this condition will apply. Yes. ठीक है ना. ये कंडीशन फाइलिंग पर अप्लाई नहीं होती, सिर्फ जब एडमिट हो जाएगी तभी अप्लाई होती है 85 पे. क्योंकि क्या है? इफेक्ट ऑफ एडमिशन. तो ही कैन ट्रेवल अप. ठीक है जी. करेक्ट. ये भी हो गया. चलिए जस्ट अ मिनट. नाउ ये तो हो ही गया ना. अच्छा, सन ऑफ मिस्टर कपिल इज सेटल्ड अब्रॉड. Whether assets owned by the son, being a family member, are required to be disclosed while filing an application? No. So whether his assets No. are also to be disclosed? No. 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 No, sir, because he is not dependent. So he is independent. He is not covered under dependent children. As per the अच्छा, whether assets of dependent children are to be disclosed? अगर मान लो सपोज हैड ही बीन डिपेंडेंट तो फिर डिस्क्लोज करने थे या फिर भी नहीं करने थे? Dependent तो disclose करना सर. ओके चलिए. As per the employment terms, the employees are entitled to interest at the rate of 8% per annum in case the wages are not paid to them by 7th of the following month. Because as per the employment terms, the wages have to be paid by 7th of the following month, and in case there is a delay, then interest is also payable. Now, while issuing a discharge order, whether Mr. Kapil can be discharged from his liability to pay the interest also in the discharge order issued under section 92, this is the question. See? So we have to read section 92, subsection 3, subsection B. So section 92, subsection 3, subsection B says that he will be discharged not only from the principal amount but also from the interest and penalties also, from the date of application till the date of the discharge order. 92 3B clearly says so. But even in the case of wages, sir.
Wages is also a kind of liability. So whatever is the liability, he will be discharged not only from the liability but also from the interest and penalties also, if any payable, if any amount is payable on that liability from the date of application till the date of the discharge order. 83, 92, 3B. By what time the RP should prepare a final list of qualifying debts? At least 7 days. 7 days before the moratorium. नहीं, 7 days तो तीनों में लिखा हुआ, चारों में लिख दिया. उसको पता है 7 days, तो आपको भी पता है, एग्जामिनर को पता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या लिखा है? At least 7 days. हाँ, तो आप ही देखो, लिखता है एट लीस्ट 7 days. 92 में लिखता है एग्जैक्टली, नॉट एट लीस्ट 7 days. ठीक है, चलिए. Suppose Mr. Ram is jointly liable with Mr. Kapil. Suppose there is some other partner also for the debts of taste bud restaurant. So what shall be the effect of discharge order issued for discharge of Mr. Kapil? अब कपिल का तो discharge order issue हो गया, तो क्या राम, suppose Ram is also another person, वो भी कुछ है, jointly वो भी काम कर रहा है, joint venture में काम कर रहे हैं, तो whether Mr. Ram will also be discharged or not? This is the question. Point B. Yes. So the answer is B. 92 subsection 6 clearly says so. So the a discharge order under subsection 2 shall not discharge any other person from any liability in respect of the qualifying debts. Now, is the discharge order issued by the adjudicating authority appealable? ये order जो Yes. है ये appealable है या नहीं है? Yes. अब इसके लिए आपको कौन सा सेक्शन पढ़ना है? सेक्शन 179 और 181. एक बार 179 देख लेते हैं क्या सेक्शन. सेक्शन 179 क्या बोलता है? सेक्शन 179 आपको बोलता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स. ठीक है. और सेक्शन 181 बोलता है अपील टू द DRAT. तो वो कहता है इंसॉल्वेंसी मैटर्स ऑफ इंडिविजुअल्स, इनके लिए DRT होगा और DRT शैल हैव जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन और डिस्पोज ऑफ. ठीक है. तो जो भी पार्ट 3 के अंदर एप्लीकेबल है उसके लिए आपके पास सेक्शन 179 है, और फिर DRT के ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर आपको अपील करनी है तो DRAT में सेक्शन 181. ठीक है. तो दिस ऑर्डर इज ऑल्सो अपीलेबल. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट की स्टडी पढ़िए जरा एक बार सुधाकर जी. Yes, sir. Yes. Chupru is a landless agricultural laborer living in a tiny village in Chamba district of Himachal. He has taken a secured loan of 50,000 from Himachal Grameen Bank for construction of his house in February 2022. Sir, However, the house was Video washed नहीं आ away with flash floods in July 2022. Jumru, in order to construct a shanty, हाँ, ठीक है. took a loan of rupees 10,000 from the village money lender at the rate of 5% per month. Jumru's wife has gold jewelry worth rupees 1 lakh, which was given to her by her parents. Jumru also has a goat and 2 hens worth 15,000. In view of the above facts, please answer the following questions. Yes. So these are the facts of the case. So facts you have seen whether this secured loan is covered. Secured loan. No. No, sir. What type of debt it is? Secured. Unsecured है ना सर ये? Secured कहाँ? Unsecured कहाँ लिखा है secured loan? He has taken a loan from village money lender है ना सर? नहीं 50,000 की बात कर रहा हूँ. Himachal Grameen Bank. 50,000 is secured, sir. वो तो ठीक है. secured है. And house was washed away in flash floods. अब ये house इसका तो बह गया पानी में. तो whether is having any dwelling unit? The answer is no. ठीक है. Now Jhumru, in order to construct a shanty, took a loan of 10,000 from the village money lender at the rate of 5% per month. Now Jhumru's wife has gold jewelry worth rupees 1 lakh, which was given to her by her parents. Jhumru also has a goat and 2 hen worth rupees 15,000. In view of the above facts, please answer the following questions. Sir, स्टडी दिख नहीं रही सर. हाँ जी, केस स्टडी दिख नहीं रही. नहीं दिख रही क्यों? नहीं दिख रही. एक बाकी मिनट, सब हो जाएगा. मैं दोबारा इसको शेयर करके दोबारा कर देता हूँ. कई बार हो जाता है, थोड़ा सा इशू हो सकता है.
अब आपका मुझे वीडियो तो आया लग रहा ना? है सर। अब आ गई? नहीं, अभी आ नहीं थी। जाएगी, आ जाएगी, अब आ गई ना? अब आई। हाँ, वो कई बार हो जाता है। हाँ जी, अब बताइए। तो पहले तो ये बताइए, इसके पास एसेट्स कितने हैं? एसेट्स 1,15,000 सर। कैसे 1 लाख? कैसे 1,50,000 वन कैसे? लाख तो 1 लाख एक्सक्लूडेड में आ रहे हैं पर्सनल। उस तो 1 लाख एक्सक्लूडेड में आ रहे हैं, बाकी इवन हेन भी जो है वो भी एक्सक्लूडेड में है। वो भी एक्सक्लूडेड डेट्स पे आ जाएगा। नहीं, बात एक्सक्लूडेड की नहीं है, देखो। इसमें बात क्या करता है, वो एग्रीगेट एसेट्स की बात करता है। यहाँ डेट वो एसेट्स, क्वालिफाइंग एसेट्स और ये सब बात नहीं कर रहा सर फिर डिस्प्ले नहीं आ रहा। है। फिर डिस्प्ले नहीं आ रहा। क्यों सुधाकर जी, नजर आ रही नहीं? आ रहे आ सर। रहे हैं सर, हमें हमें तो आ रहे हैं सर। वो किसी किसी कभी का ना नेट का इशू हो सकता है, और कोई बात नहीं। बिल्कुल ऐसा डार्क हो रहा है। है। मुझे दिख बिल्कुल रहे हैं डार्क हो रहा सर, अदर्स अदर्स वेदर इट्स विजिबल और नॉट। है, बहुत डार्क हो रहा है। नो, सो इट इज विजिबल। वैसे भी मैंने तो ये डिस्कस भी की हुई है। ये आपको ग्रुप में भी डाल रखी है, वहां से अपने से खोल लो, आप अपने लैपटॉप पे खोल लो। जी जी। वो कई बार क्या होता है, थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है, अगर किसी को नजर आ रही किसी को नहीं नजर आ रही तो उसमें फिर आपके सिस्टम का कुछ दिक्कत है, वहां कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है। ओके, ठीक है जी। जैसे सुधाकर जी को नजर आ रही है, आप मैडम को नजर आ रही है, इसका मतलब तो दिखाई तो दे रही है ना? तो पीपीटी खोल ली मैंने। मेरे को भी नजर आ रही है। हाँ हाँ, आए। विंडोज प्रोसेस स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन। हाँ हाँ हाँ। राइट है, तुमको नजर नहीं आ रही। देखिए बता ऐसा बता। है, पहली बात तो आप ये बताइए कि वेदर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्लूडेड एसेट्स विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ फ्रेश स्टार्ट। लेट अस डिस्कस दिस थिंग फर्स्ट। ये जो एक्सक्लूडेड एसेट्स वाली कॉन्सेप्ट है, क्या फ्रेश स्टार्ट में एप्लीकेबल होगी? यस और नो? वी हैव टू रीड सेक्शन 80 फॉर दिस। सो व्हाट सेक्शन 80 सेज? एग्रीगेट एसेट्स। सेक्शन 80 क्या बोलता है? सेक्शन 80 बोलता जी। है एग्रीगेट एसेट्स, वहां क्वालिफाइंग और उसकी बात नहीं हो रही, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द एसेट्स डज नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज। तो एग्रीगेट एसेट्स है। हम्म। तो एग्रीगेट एसेट्स कितने हैं इसके पास? इसके ये पास तो सत्तर। 15,000 के एसेट्स हैं फिलहाल। हाँ जी, हाँ जी। और वो 20,000 नीचे आते हैं। हाँ, बिजनेस। और जो वाइफ की ज्वेलरी, वो तो आपकी उसमें उसके पास तो नहीं है ना ज्वेलरी। जी जी। भाई, आप सेक्शन 80 क्या बोलता है? सेक्शन 80 ये थोड़ी बोलता है फैमिली की भी इंक्लूड करोगे आप। वो तो ये कहता है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द डेटर। डेटर एंड इज इमीडिएट फैमिली लिख देता, फिर ऐसा तो नहीं लिखा ना उसने। जी उसने क्या लिखा? डेटर। तो अब आप ये बताइए, पूजा जी आप बताओ कि हाँ ये जी। जो एक्सक्लूडेड एसेट्स वाली कॉन्सेप्ट है, ये फ्रेश स्टार्ट में एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी? सर, इसमें हाँ जी। सर इंडिविजुअल बैंक्रप्सी में होगी। हाँ, इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है जी। यही मैं वेट कर रहा था। हाँ, ठीक है जी, चलिए। अब चलते हैं हम अगले उस पर। तो कैन झुमरू अवेल फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस? ये कर सकता है नहीं कर सकता? हाँ जी, कर सकता है। व्हाट रेमेडी द मनी लेंडर हैज इन केस झुमरू डजन पे? मान लो झुमरू ने पेमेंट नहीं किया, तो मनी लेंडर के पास क्या रेमेडी है? देखिए ऐसा है कि देर आर सर्टन ग्राउंड्स विच हैव बीन स्पेसिफाइड ऑन विच द क्रेडिटर कैन रेज द ऑब्जेक्शन। ठीक है। क्रेडिटर हर चीज पर ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता, देर आर सर्टन लिमिटेड ग्राउंड्स। वो ग्राउंड्स कहाँ लिखी हुई हैं? सेक्शन 86 सब सेक्शन 1 में। 86(1) क्या बोलता है? 86(1) बोलता है, पहली बात, इंक्लूजन ऑफ ए डेट एज ए क्वालिफाइंग डेट, और दूसरा, इनकरेक्टनेस ऑफ द डिटेल्स ऑफ द क्वालिफाइंग डेट। ये दो ही ग्राउंड्स पर जो है वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है।
एक। नाउ नेक्स्ट, हिमाचल ग्रामीण बैंक क्या है? ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, शेड्यूल्ड बैंक है, क्या है ये? शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल। What is ग्रामीण the बैंक। amount of aggregate value of assets owned by Jhumru for filing an application? Aggregate amount कितना है assets? 15,000 से हाँ, तो 15,000। 15,000। What is the amount of qualifying debts owed by Jhumru for filing an application? क्वालिफाइंग डेट कितना है? दोबारा केस स्टडी देख लीजिए, क्वालिफाइंग डेट कितना है इसका? सर 10,000 ही करेगा क्वालिफाई, हाँ जी, 10,000 ही करेगा क्वालिफाई। हाँ क्वालिफाइंग तो वही है, 10,000 ही है। 10,000 प्लस इंटरेस्ट अगर कुछ होगा तो वो होगा, है ना, 10,000 प्लस इंटरेस्ट। कैन द इंटरेस्ट चार्ज बाय द प्राइवेट मनी लेंडर बी ट्रीटेड एज एक्सटॉर्शनेट ट्रांजैक्शन? ये जो ये कह रहा है कि मनी लेंडर उससे कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है? 5% पर मंथ। 5%। तो ये एक्सटॉर्शनेट है क्या? 5% per month. है तो सही एक्सटॉर्शनर, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्रेश स्टार्ट, ये इसमें आपको आता ही नहीं। आपको ये देखना है सेक्शन 90 सबसेक्शन 2। सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 आपका बोलता है रिवोकेशन ऑफ द, नहीं रिवोकेशन नहीं, ये may apply to the adjudicating authority for directions in relation to any other matter under this chapter for which no specific provisions have been made। तो जिसके बारे में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, अगर उसकी एप्लीकेशन लगानी है तो 90 सबसेक्शन 2 में लगा सकता है। तो ये कह सकता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि ये एक्सटॉर्शनेट है। ठीक है, कुछ चीजें है ना लॉ में नहीं लिखी मान लो, तो So D बोल्ड is the कलर answer. कर। हाँ जी, D is the answer. Subject to decision of adjudicating. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। तो आपको ये इसका आंसर होगा। तो ही कैन अप्लाई अंडर सेक्शन 90 सबसेक्शन 2। और प्राइवेट मनी लेंडर क्या है? अनसिक्योर्ड है। Secured credit. देखो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है ये। वाई? बिकॉज ही इज नॉट रेगुलेटेड बाय ए फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। रेगुलेटर। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर की डेफिनेशन दे रखी है ना? तो Yes. फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर तो है नहीं है, सिक्योर्ड क्रेडिटर भी नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है इसके पास, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी नहीं है, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में आएगा। अच्छा, बैंकरप्सी वाली केस स्टडी तो अभी नहीं है काम की। अच्छा, ये देख लीजिए एक बारी। ठीक है सर। So MM is a gym located at leased premises in Lajpat Nagar, New मैं Delhi. थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको। ठीक है सर। अब बड़ा है ना? अब ठीक है, थोड़ा ज्यादा बड़ा कर देते हैं फिर छोटा। थोड़ा बड़ा अब ठीक है ना? हाँ जी, पढ़िए। फुल भी दिख रही। So MM is a gym located at leased premises in Lajpat Nagar, New Delhi. Because of competition and other issues, MM is facing financial difficulties and it is not able to meet its liabilities. All the efforts to revise the business, cut the costs, or even sell the business were unsuccessful. Payment to equipment suppliers and maintenance agencies are due for supply services provided in the previous 3 months amounting to around 2 lakh rupees. The rent for its premises remains unpaid for 3 months amounting to 90,000 rupees towards landlord Mr. D. The landlord has received advance for 3 months, lease deed provided for 1 month rent as security and 1 month rent as advance. MM has a loan account with XYZ Bank which remains unpaid for last 2 months. The monthly EMI for the loan is rupees 1 lakh. MM was managed by Mr. M as a sole proprietor. MM has employed 7 persons, including 3 trainers, 1 accountant, and 3 housekeeping staff. The salaries due to these employees were paid in half since the past 4 months. The housekeeping staff are covered under the definition of workmen. Mr. M made an application under Section 94 of the IBC 2016 for initiation of insolvency resolution of MM.
The adjudicating authority admitted the application and appointed P as a resolution professional. The adjudicating authority considered the repayment plan approved by the creditors and rejected it. लेकिन ये बैंक्रप्सी पर है, अभी इसको नहीं करते क्योंकि बैंक्रप्सी तो हमने अभी किया नहीं ना। हम एक काम करते हैं कि ये कुछ क्वेश्चन से आप देख लीजिएगा, तो हम लोग जो है ना थोड़ा सा इंसॉल्वेंसी पढ़ लेते हैं उसको, है ना। तो लेट अस रीड वो जो इंसॉल्वेंसी का 1 पेज समरी है ना, उसको पढ़ लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको फिर वो समझ में आ जाएगा कुछ। ये है इंसॉल्वेंसी सेक्शन 94। 94 से पढ़ लीजिए, 93 तक हमने कर लिया Individual insolvency, sir. है। इंडिविजुअल, यस। ये PG एक CD है। मिनट, इसको मैं थोड़ा सा, अब ठीक है, हाँ जी। Yes, sir. हम्म Section 94. तो 94 to 120 आपका एक ही शीट में कवर हो जाएगा पूरा। Yes. चलिए, Yeah. Section 94. Debtor can apply to start interim resolution process. Majority partners to apply should not be undergoing any other process, only for qualifying debts. actually section 94 and 95, there are two sections. Under section 94, debtor can apply. Now part 3 is applicable not only to individuals but to partnership firms also. So in case the application is being made by the partnership firm, then majority of the partners have to apply. Okay? And it should not be undergoing any other process. Any other process means fresh start, individual insolvency, bankruptcy. And this application is only to be made for the qualifying debts. Section 94. Now 95. 95. So this is the creditor, whether singly or jointly, can apply to adjudicating authority, providing the proof of demand and non-payment, details of debt, failure to pay within 14 days. So 94 talks of the concept of creditor. So here there is no concept of financial creditor or operational creditor. The word used is creditor. So creditor singly or jointly. So they can apply, and there is a provision for nomination of one of the persons. And what he has to give the proof of demand and non-payment, details of the debt, and that the debtor was failed to pay within 14 days of the demand notice. So before moving an application under section 95, he has to give a demand notice to the debtor to pay. And if he fails to pay within 14 days, then the creditor can file the application either singly or jointly. ठीक है, तो 95 ये बोलता है। यस प्लीज 96। अच्छा Yes, sir. चलो अभी 94 पे देखो। 94 में नाउ सपोज द डेटर हैज टू अप्लाई, सो वेदर देयर इज एनी फॉर्म अवेलेबल, इसके लिए फॉर्म अवेलेबल है क्या? So there is Yes, the sir. yes, sir. यस। सो इसके लिए कौन से प्रोविजन लगेंगे आपके? एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स। ठीक है, ये वाले प्रोविजन लगेंगे। हेलो, हाँ जी हाँ जी, मेरी क्लास चल रही सर, मैं करता हूँ थोड़ी देर में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसमें ये है, ठीक है जी। सो क्रेडिटर सिंगली और जॉइंटली। तो 94 Joint. में Yes, sir. व्हाट इज द एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, कहाँ पर है इसका? अगर डेटर ने अप्लाई करना हो तो कौन से फॉर्म में करेगा और कितनी फीस है ये बताइए। सर ये The fees तो 94 15,000 है। 15,000 कहाँ आ गई? गरीब लोग हैं ये, 1,000 रुपये का तो डिफॉल्ट है। 15 सर। 15 कहाँ, 15 नहीं है, वो तो पार्ट 2 में छोड़ा है आप, अब पार्ट 3 में आ चुके हो आप। बट सर 94 कहाँ प्रिस्क्राइब करता है फीस और फॉर्म? वो तो सब ये कहता है एज में बी प्रिस्क्राइब। तो भैया प्रेस्क्राइब्ड हो चुकी ना, वही तो मैं Prescribed बता in रहा the हूँ। regulations. ये इसकी 2,000 रुपये ले लो फीस, क्या गरीब आदमी से 15,000 कहाँ लोगे आप? एक मिनट, ये पर्सनल गारंटर है सर, गरीब आदमी है सर ये। और क्या?
ये है ना, ये ये नजर आ रहा होगा। एक मिनट, मैं भी देख लेता हूँ। तो पहले बताओ, फॉर्म नंबर बताओ क्या है इसका, और फीस कौन सी है, और कहाँ लिखी है ये फीस। इसके पीछे मैंने प्रोविजंस डाले होंगे मेरे हिसाब से, इनके स्टडीज के पीछे। देखो मेरी बात क्या है, पढ़ना आ जाना चाहिए, भाई पढ़ना कहाँ से है, लिखा कहाँ पर है, वो भी तो जरूरी है। आपको एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स में ये बात मिल जाएगी। एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स। फॉर्म ए है सर, 2000 फीस। कितनी है, 2000? 2000 है सर। बस, और क्या, वही तो मैं कह रहा था, गरीब आदमी 2000 रुपये ले लो, बहुत है, और क्या। सर ये देखो, 15,000 है किसी केस में। वो सीआईआरपी में है जी, जी। वो तो सीआईआरपी पार्ट 2 में है ना वो तो। हाँ जी। हाँ, ये सेक्शन है वाह। सारे, ये आपका। सीआरपी में जहाँ करोड़ों की बात है वहां 15,000 फीस है। हाँ, ये सेक्शन है पहले, ये सेक्शन के बाद में आपके ये आ गए इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, है ना, नजर आ रहा है ना आपको ये। अभी थोड़ा छोटा हो, इसको बड़ा कर देता हूं। तो ये यहाँ पर है आपका एसोसिएट, ये जनरल एलिजिबिलिटी, एडमिशन। ये दे दिया, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, कोरम, फाइलिंग विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ये तो रीपेमेंट प्लान है, एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज, ये फॉर्म ए आ गया आपका, ये रिटर्न कंसेंट, ये आपके आ गए। इसके बाद में रेगुलेशंस, एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स, ठीक है जी। तो एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स में बता दिया कि एप्लीकेशन बाय गारंटर, तो एप्लीकेशन बाय गारंटर कौन से फॉर्म में लगेगी और कितनी फीस होगी, ये यहाँ दे रखा है। क्या देता है ये, फॉर्म ए है, ठीक है, अलॉन्ग विद फीस ऑफ 2000 रुपीज। और अगर एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर लगाएगा तो सीधे एप्लीकेशन नहीं लगा देगा, है ना, तो उस केस में क्या होगा, पहले ये मैं डिमांड वापस। नोटिस देगा, ठीक है, डिमांड नोटिस देगा फॉर्म बी में, और फॉर्म बी में डिमांड नोटिस दे करके और एप्लीकेशन लगेगी फॉर्म सी के अंदर अलॉन्ग विद फीस ऑफ टू थाउजेंड 2000। रुपीज ठीक है जी। तो क्लियर हो गया ये। और वेदर इट कैन बी विड्रॉल ऑल्सो, ये एप्लीकेशन एक बार लगा दी तो क्या विड्रॉ हो सकती है, यस, हो सकती है। हो सकती है। तो ये हमारा को रूल 11 बताता है। रूल 11 क्या कहता है, रूल 11 कहता है कि दो सिचुएशन है, पहला बिफोर इट्स एडमिशन, अगर बिफोर इट्स एडमिशन ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द एप्लीकेंट, ऑन रिक्वेस्ट मेड बाय द एप्लीकेंट, और आफ्टर इट्स एडमिशन ऑन द रिक्वेस्ट मेड बाय द एप्लीकेंट इफ 90% ऑफ द क्रेडिटर्स एग्री टू सच विड्रॉल, ठीक है। अगर 90% ऑफ क्रेडिटर्स विड्रॉ के लिए अप्लाई होती है, और एप्लीकेशन आपको देनी है कहाँ पर, फॉर्म डी के अंदर। अच्छा, अब ये बताइए, जो एप्लीकेशन बाय गारंटर होगी उसमें क्या एसोसिएट की भी डिटेल जाएंगी, या फैमिली, इमीडिएट फैमिली की भी डिटेल जाएंगी, या नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंडिविजुअल सर, है इंडिविजुअल है ना सर, क्या? इंडिविजुअल ओनली हिज सर। अच्छा, लेट अस सी, फॉर्म ए देख लेते हैं, ये फॉर्म ए है ना, फॉर्म ए में देख लो क्या डिटेल जानी चाहिए। हम्म, ये फॉर्म ए है। अब देखो, लिस्ट ऑफ एसेट्स ऑफ गारंटर एंड इमीडिएट फैमिली, ठीक है, पॉइंट नंबर 11, गारंटर के और इमीडिएट फैमिली, ठीक है, चाहे एक्सक्लूडेड है चाहे नहीं है, तो गारंटर के भी जा रहे हैं और इमीडिएट फैमिली के भी जा रहे हैं, ठीक है। ये पूरा फॉर्म है। ये पूरी डिटेल लगानी है, कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, फलाना ढिमकाना, लंबा चौड़ा है, पूरी लिस्ट है इसकी। फॉर्म ऑफ डिमांड नोटिस,
तो डिमांड नोटिस के बाद कितने दिन के लिए वेट करनी है इसको, क्रेडिटर को? फॉर हाउ मेनी डेज ही हैज टू वेट बिफोर फाइलिंग एन एप्लीकेशन? 14 days, sir. 14 डेज, ठीक है। और एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर आपकी फॉर्म सी के अंदर है, ठीक है, ये फॉर्म सी है। और फॉर्म डी एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल, ठीक है। तो चार ही इसके अंदर फॉर्म है। अभी हमारा, चलो 94 95 तो हमारा हो गया, ठीक है। अब हम 96 से ले लेते हैं। 96 क्या बोलता है, थोड़ा थोड़ा Inter- आपको आइडिया हो जाए। आज 120 तक पढ़ लेंगे एक बार, है ना, मोटा मोटा। चलिए, Right, sir. 96 क्या बोलता 96 is interim moratorium commences on date of application. है? राइट, No सो other actions allowed. नाउ दिस इंटरिम मॉरेटोरियम इज समथिंग सिमिलर टू जो इससे पहले वाला था, फ्रेश स्टार्ट। उसमें वही एक्शन किस चीज के अगेंस्ट भी नहीं हो सकता, डेट्स के अगेंस्ट भी नहीं हो सकता। बाकी कोई प्रोसीडिंग पर कोई बार नहीं है। मान लो कोई क्रिमिनल कोई एक्ट कर दिया इसने, तो लीगल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड, है ना। बट लीगल प्रोसीडिंग्स इन रिलेशन टू डेट्स कैन नॉट बी इनिशिएटेड, इतना ही है। अगर कोई पुरानी वाली भी है, दे विल बी स्टॉप्ड। 97। So 97 is if through RP, AA seeks board confirmation of no disciplinary proceedings. 7D, if no RP, So here in this section 97 is the only section where the board also has to revert within 7 days, ठीक है। अब ये ड्राफ्टिंग एरर है या जो भी है, लेकिन 97 ही ऐसा सेक्शन है जिसमें एडजुडिकेटिंग वो जो बोर्ड को भी 7 दिन के अंदर ही रिवर्ट करना है। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सब जगह 10 डेज के अंदर ही बोर्ड को रिवर्ट करना है, ठीक है। एंड दिस एप्लीकेशन कैन बी मेड बाय द डेटर हिमसेल्फ और बाय द क्रेडिटर हिमसेल्फ और थ्रू आरपी। दोनों तरह से एप्लीकेशन फाइल हो सकती है, ठीक है। बट इन केस it is filed through RP, adjudicating authority will seek confirmation from the board that no disciplinary proceedings are pending. Now 98. 98 क्या बोलता है? creditor or debtor can seek change of RP. AA will refer to board within 7 days and board will recommend within 10 days. So here the concept वो जैसे फ्रेश स्टार्ट में था, सेम क्रेडिटर और डेटर। अब 98 में क्या लिखता है, क्रेडिटर लिखता है या क्रेडिटर्स लिखता है? वहां तो क्रेडिटर लिखा था, यहाँ भी क्रेडिटर ही लिखा होगा लगता है, कॉपी पेस्ट किया होता सब। डेटर और दी क्रेडिटर, तो इवन ए सिंगल क्रेडिटर कैन मूव एन एप्लीकेशन, ठीक है। 99, यस प्लीज। RP will recommend acceptance or rejection of application within 10 days. He can seek all information and no dispute on IU information. So here also RP is under duty to recommend acceptance or rejection of the application, and 10 days are given to him, and he can seek all information. But if any information is recorded with the information utility, then it cannot be disputed, ठीक है। अच्छा, ये जो लिखा है आरपी विल रिकमेंड एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, इसके लिए कोई इज देयर एनी फॉर्मेट? रिपोर्ट का कोई फॉर्म नंबर है क्या? हाँ जी, देयर इज नो नो प्रेस्क्राइब, सर, नो सर। ऐसा कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो आरपी विल गिव हिज रिपोर्ट इन जनरल फॉर्मेट, ठीक है। चलिए, नाउ 100। अब ये 100, 115 और 118 तीनों आप नोट करोगे, मैंने रेड में मार्क किए हैं। रेड में क्यों मार्क किए हैं? ये रेड फ्लैग है, यहां से सीधा बैंकरप्सी स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ये तीनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, 100, 115 और 118। पढ़िए पढ़िए, 100 Yes, पढ़िए। 100. So within 14 days of report, the adjudicating authority will accept or reject application. If intent to defraud by debtor, creditor allowed to file for bankruptcy. So it says when application has been made and it is felt that it is being done to defraud, if the intention is to defraud, so then here creditor shall be allowed to file for bankruptcy. Otherwise normally क्या होता है, पहले इंसॉल्वेंसी होगी,
इंसॉल्वेंसी में ही विल ट्राई फॉर रीपेमेंट, क्योंकि यहाँ रेजोल्यूशन तो होना नहीं है, क्योंकि वी आर डीलिंग विद इंडिविजुअल्स, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, रीपेमेंट होगा, रीपेमेंट प्लान आएगा, रेजोल्यूशन प्लान नहीं आता इसमें, है ना। तो यहाँ रीपेमेंट प्लान आता है, और अगर रीपेमेंट प्लान सक्सेसफुल नहीं हो तो फिर बैंक्रप्सी फाइल होती है। लेकिन यहाँ क्या है, सेक्शन 100 वैसे भी पुलिस का सेक्शन है, पुलिस का नंबर होता है ना 100। तो यहाँ पर क्या है, क्रेडिटर शैल बी अलाउड टू फाइल फॉर बैंक्रप्सी, सीधा, ठीक है। डेटर हियर कैन नॉट अप्लाई फॉर बैंक्रप्सी, बट क्रेडिटर कैन अप्लाई। यस, Right, sir. सेक्शन 101 प्लीज पढ़िए। Yeah, on acceptance, moratorium for 180 days of हाँ, 100. तो यहाँ पर मॉरेटोरियम स्टार्ट, ठीक है, चलिए 102। Yeah. AA shall issue public notice within 7 days of acceptance and invite claims from all creditors within 21 days of notice. So section 102. Section 102 says adjudicating authority shall issue public notice. तो इस पब्लिक नोटिस का कोई फॉर्म है क्या, या कोई फॉर्म नहीं है? भाई ऐसा है, इस पब्लिक नोटिस का कोई फॉर्म नहीं है। बैंक्रप्सी में दे रखा है देयर इज अ फॉर्म, बट यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं है। तो जनरल फॉर्म जो बाकी जगह यूज होता है वो यूज कर ले, इसके लिए कोई प्रेस्क्राइब फॉर्म नहीं दे रखा है। यस प्लीज। Yes, sir. 102. 3, sir. 103. Creditors to provide all details of debt to RP along with other required details. हाँ, ठीक है, you give the details. Yes. 104. RP to prepare list of creditors with the details within 30 days of notice. So he shall prepare the list of creditors. 30 days notice. Then debtor to prepare repayment plan with resolution, professional with justification. Actually, in consultation with RP, है ना। तो डेटर प्रिपेयर कौन करेगा, डेटर विल प्रिपेयर इन कंसल्टेशन विद आरपी, है ना। एंड देयर शुड बी जस्टिफिकेशन कि भाई जो भी रीपेमेंट प्लान वो सजेस्ट कर रहा है कि वो वर्केबल भी है या नहीं है। Right, sir. ठीक है। So RP will have authority to manage all assets and operations. So here we have never talked about fees। भाई फीस का क्या होगा, फीस कौन देगा? तो फीस के बारे में सेक्शन 105 2B बोलता है। सेक्शन 105 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन बी क्या बोलता है, प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ फीस टू द आरपी। तो जो रीपेमेंट प्लान आएगा ना, रीपेमेंट प्लान में फीस के बारे में भी बताया जाएगा कि भाई इसकी फीस कब देनी, ठीक है। 105 2B। यस प्लीज। 106. RP shall submit repayment plan within 21 days of creditor submission. Ensure it is compliant. Have creditors meeting. Provide reasons. Actually, here there is no concept of committee of creditors। तो यहाँ पर क्या बोलता है, भाई क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाएगा, और अगर नहीं बुलाना चाहता तो ही विल प्रोवाइड रीजंस। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही क्रेडिटर हो या दो ही क्रेडिटर हो, इंडिविजुअल के साथ डील कर रहे हैं ना हम, और 1000 रुपए का डिफॉल्ट है, समझ रहे हो आप। तो इसलिए हो सकता है क्रेडिटर हो ही नहीं, एक या दो ही क्रेडिटर हो, तो क्या मीटिंग बुलाएगा उसकी, वैसे ही डिस्कस कर लेगा उनसे। 107। Yes, sir. Creditors meeting notice 14 days with repayment plan, proxy forms. तो 107 में क्या बोलता है, 107 में बोलता है कि क्रेडिटर्स मीटिंग कैन बी हेल्ड विद ए नोटिस ऑफ 14 डेज, ठीक है। एंड दे विल डिस्कस द रीपेमेंट प्लान एंड प्रॉक्सी फॉर्म्स इज आल्सो गिवन व्हाइल गिविंग द नोटिस फॉर मीटिंग। 108। Creditors have to approve plan and RP should get debtor consent to any changes. हाँ, एक्चुअली हियर whatever plan is proposed by the debtor in consultation with RP, creditors have to approve, है ना। But if creditor suggests some modification, suppose the debtor says that he will pay within 2 years, but the creditor says no, you pay within 1 year. So any such change, the consent of the debtor has to be obtained, क्यों पैसे तो उसी ने देने हैं ना, इसलिए। चलिए नेक्स्ट। Right, sir. 109। 109, sir. The creditors entitled to vote in meeting in proportion to their voting share. So 109 says that the creditors shall have voting right in proportion to the vote share. Now
Suppose the name of the creditor is not mentioned in the list, then he will not be allowed to vote. Or if he is an associate of the debtor, तो associate भी allowed नहीं है वोट करने के लिए. अब एसोसिएट के बारे में बताइए कि सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स. ठीक है. नाउ ए इज फेसिंग दिस इंसॉल्वेंसी. ठीक है. तो बी की वाइफ क्या एसोसिएट है ए की या नहीं है? Whether B's wife is an associate of A or not? This is the question. तो एसोसिएट होगा ना, वो डिटेल्स फॉर्म में पूछा ना सर. राइट. तो एसोसिएट होगा क्योंकि डेफिनेशन ऑफ एसोसिएट में कवर्ड है. और डेफिनेशन कहां दे रखी है आपके 79 में. तो 79 की जो डेफिनेशन है वो पूरे पार्ट 3 पर एप्लीकेबल है. और उसमें 79 में क्या बोलता है? रिलेटिव ऑफ पार्टनर, एसोसिएट ऑफ द डेटर, a person who is in partnership with the debtor, and a person who is a spouse or a relative of any person with whom the debtor is in partnership. ठीक है. तो दोनों कवर. Yes please. Next. Yes. Next. 110. 110. Yeah. So 110 is if secured creditor joins, he forfeits the right to security. If not participating, should inform RP of details. So he says now this secured creditor has got two options. He may join the creditors meeting, he may not join, but he has to intimate. ठीक है. And suppose he joins the meeting of creditors, then he forfeits his right to enforce the security. ठीक है. And if he is not participating, then he should inform the RP that he will not be participating. Yes, please. 111. Yes, sir. Repayment plan to be approved by more than 3/4 of the creditors in value. So here, what is important is more than 3/4. The word more than is also important. Suppose a plan is approved with 75% majority. So shall it be considered approved? The answer is no. No, sir. The value should be 3/4, sir. More than 3/4. More than 3/4. Okay. मतलब 75 से पॉइंट कुछ ज्यादा होना चाहिए. 76 हो या 75.5 हो, इस तरह से. एग्जैक्टली 75 पर नहीं होगा. मोर देन लिखा है. ठीक है. तो वी हैव टू गो बाय द रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन. मोर देन 3/4 in value. Yes, please. Then RP to prepare a detailed report of each creditor's committee meeting. So RP shall prepare a detailed report on the various meetings of the creditors that have taken place. Yes, please. Then 113. Copy of report to be provided to debtor, all creditors, including those absent. So the adjudicating authority order, sir, iska to the adjudicating authority को देना है. Given to the adjudicating authority also. 114. Adjudicating authority may approve repayment plan based on RP recommendation and its examination. So debtor will prepare the repayment plan in consultation with RP. Creditors may suggest modifications, but those modifications have to be approved by the debtor, and ultimately an application shall be filed to the adjudicating authority, who may approve or reject. Yes, please. 115. A approval starts repayment plan. Rejection So entitles if the adjudicating authority approves, then repayment starts. Then rejection entities entitles debtor and creditor to file for bankruptcy. Suppose this repayment plan is rejected by the adjudicating authority. So repayment plan may be accepted or rejected. So in case it is rejected, so in that case, the debtor or creditor can file for bankruptcy. Yes, 116. So the RP to supervise implementation of the repayment plan. So RP shall be responsible for implementation of the repayment plan. 117. RP will provide notice of repayment completion within 14 days and provide detailed report with summary of receipts and payments. तो क्या कहता है? So RP will provide notice of repayment completion within 14 days. And provide detailed report with summary of receipts and payments. Right. So whenever the repayment plan is complete, so within 14 days, RP will provide notice of repayment completion.
and he will provide a detailed report with summary of receipts and payments, just like liquidation cases. Next, 118, sir. Plan ends prematurely if not fully implemented. RP will report details. Debtor creditors can apply for bankruptcy order. So, suppose plan was approved, but there was a premature end to the plan. So, all the payments could not be made. He made some payments, but then other payments were not made. Okay, next. The discharge order on recommendations of RP by adjudicating authority. So, in this case, whatever payments have been made, suppose the plan was implemented to the extent of say 60%. So, in that case, what will happen? Accordingly, the discharge order shall be made and the balance creditors, so they can apply for bankruptcy. Yes, please. Yes, sir. Last one, sir. Next, yes. RP to perform all duties within code of conduct. Yes. So this completes our individual insolvency process. ठीक है, अब इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि अब आप इसको इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी भी अपने आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं. ठीक है जी. तो बाकी सबको हैप्पी रक्षाबंधन. थैंक यू, सेम टू यू सर. हाँ, थैंक यू सर. बाकी जो है अपना संडे को क्लास फिर लेते हैं, है ना? संडे को लेंगे 10 to 12. अच्छा, 10 to 12 बताया था सर. हाँ, एलाइड लॉज अगर करेंगे तो कौन सा करेंगे उसमें? एलाइड लॉज सर कंपनीज एक्ट कर लीजिए. कंपनी एक्ट कर लें. देखो ऐसा है, बड़ा वास्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कंपनी एक्ट कर लो, क्या दिक्कत है? कंपनी एक्ट कर लो, कंपनी एक्ट करते हैं. ठीक है, ठीक है जी. राइट सर. राइट सर. कंपनी एक्ट करेंगे. कुछ पर्टिकुलरली बताएं या कुछ भी करेंगे टच? हाँ जी, क्या करें? कंपनीज एक्ट में कोई पर्टिकुलर टॉपिक या आप नहीं, कंपनी एक्ट में ऐसा है ना, कंपनी एक्ट पूरा तो हमारे सिलेबस में है नहीं. हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में कुछ चैप्टर्स हैं, उसी चैप्टर में प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस है हमारे पास. मेरे हिसाब से हम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमेलगमेशन करें, उसके ऊपर नॉर्मली केस स्टडी आती है और वो थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक भी है ना? तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमेलगमेशन करेंगे. ठीक है जी. या वाइंडिंग अप कर लेंगे. दो टॉपिक ले लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और वाइंडिंग अप. दोनों टॉपिक बहुत बड़े हैं सर. और ऐसा है, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, तब तक आप पढ़ेंगे भी तो सही. थोड़ा बहुत आप पढ़ के आएगा, थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेंगे. मैं आपके साथ वो पुराने वाली वीडियो रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, उसको भी आप पढ़ लेना. हाँ, वो बेटर रहेगा. देख लेंगे, जितना कवर होगा उतना कर लेंगे, उसमें क्या है ना? हाँ जी. ओके, ओके जी, गुड नाइट. थैंक यू सर.